Okay. So any reaction which you are not able to balance last class? सर हाँ जी. आप एक बार सारे स्टेप्स रिवाइज करवा सकते हो फिर से? Okay, I'll tell you. Simple 4 steps hai. We have 4 steps for balancing the reaction. First step is identify all the functional atoms. That means those atoms which are changing their oxidation state on the other side of reaction. Okay? After identifying it, write the two half reactions in which you will be including only those substances which are having functional atoms. Okay? Then you will be balancing the functional atom from both the sides by assigning appropriate coefficient to the substances. ठीक है? इसके बाद total change in oxidation state के बराबर will be allotting the electron on the right side of the OHR and on the left side of RH. Before adding the two half reactions, what we are going to do, before adding the two half reactions, we'll be multiplying each half reaction so that the electrons are equal in the two half reactions, and then we'll add it. Okay? After adding those things, if the reaction is molecular, we have to see other than H and O, all the atoms are balanced or not. If they're not balanced, I'll be adding appropriate number of appropriate substance which is going to fulfill that deficiency. Okay, that's one part. After that, we'll be balancing hydrogen by H2O, assigning the appropriate number of H2O on the required side, which is deficient in hydrogen. Itna ho gaya. If the reaction is, and oxygen will automatically be balanced. Uska agla kya hai? If the reaction is ionic, then after the third step, we need to balance the charge by allowing or assigning appropriate number of H plus or OH minus to the appropriate side. If I am having H plus, that means if I am balancing the reaction in acidic medium, I'll be assigning H plus on the side which is having less charge, so that the charge will increase and it will be equal to the other side. Okay? If OH minus is there, then I'll be adding that OH minus to the side which is having greater charge, so that again that charge will decrease and it will become equal to the other side ka charge. Itna karne ke baad again I'll balance the hydrogen atom by adding a H2, appropriate number of H2 on the required side, and then oxygen will automatically be balanced. This is the method. ठीक है? अब ये 4 स्टेप जो है ना, जितनी बार करोगे उतना माइंड में फिट हो. That's all we have to do in the balancing. While doing that, sometimes I told you, if I am having a reaction like CuHNO3 giving CuNO3 plus NO, in this case, if you see in the half reaction, when I am balancing Cu, nitrogen of copper nitrate has not been balanced. है ना? That's why when you add these half reactions, ना, तो फिर बाद में पता चलता है कि nitrogen is not getting balanced because you have balanced the HNO3 का nitrogen with the NO का nitrogen. बाद में you need to add extra HNO3, like I have added 6 extra HNO3 to balance the copper nitrate का nitrogen. ठीक है? तो such type of situations will be coming. एक बार ट्राई कर लो, कहीं पर डाउट रहेगा तो पूछ लोगे. एनी डाउट अभी तक? या हर्ष? Sir, I have a doubt in N, O, and R. फिर से बोलो. Like number N, O, and R. नंबर? Sorry, alphabet N, O, and R. हाँ? In these, like in question 6. N, O, and R. अच्छा, okay. I was thinking, what is N, O, R? Okay, I have given the numbers. Okay. N is there and O is there and R is there. These are the answers. Anything सर else? मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा क्योंकि वो स्टेप्स ही क्लियर नहीं था मुझे, तो इसके लिए एक बार ठीक है. फिर से ट्राई करो. प्रिसा, you are asking something? Sir, I and M. I and M. M. This one? Okay, let's see. सर मुझे टाइम नहीं मिला करने के लिए, लेकिन I'll do today and I'll send. और Okay. ask on Thursday or something. क्योंकि इसमें अगर कॉन्फिडेंस आया तो मार्क्स आर गारंटी. हाँ सर, I'll do and I'll ask you when I make next No, time. ठीक है, एक एक करके करते हैं. So if I see I वाला इधर ही कर लेते जितना हो पाता है. So if you see the I1, हाफ रिएक्शन करके बताओ कि डायरेक्ट बताओ? सर हाफ रिएक्शन करके बता दीजिए ना. हाफ रिएक्शंस करके. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. So if you see I, oxidation state if you check na, O is -2 तो U will become +4 है ना. Cr is +6. First to check the oxidation states which I am allotting है ना. -4 तो then it has to be +6. It will be +3. Okay, and that's why if I write OHR, I'll be writing oxidation half reaction में I'll be writing UO2 plus
giving UO2 2 plus. Check करते जाना. If you get the mistake, identify it, है ना? Whatever mistake you must have done. So second reaction is this one, giving Cr3 plus, but Cr is not balanced, so that I need to put appropriate coefficient that I am putting here. Then we'll be putting the electrons by calculating the total change in oxidation state. U was in +4, it is going to +6, and that means 2 ka change per U, and there is just 1 U. That's why total change is of 2 electrons. In this case, +6 to +3, 3 ka change per chromium, but we have 2 chromium, and that's why total change will be of 6. So before adding it, I am equating the electrons so that if you add the reaction, I am getting 3UO plus 2 plus Cr2O7 2 minus, and that is giving us UO2 2 plus 3 UO2 2 plus 2 Cr3 plus. Now I'll check the charge because this is reaction is ionic. If you see the total charge on the left side, how much is the charge on the left side? कितना चार्ज दिख रहा है? +4. +4 +6 -2 है ना? So that's why +4 is on the left side. What is the charge on the right side? +12. +6 +6 है ना? So +12. So there is deficiency of +8 on the left side, and if you see medium is acidic because they have written it H plus. So that's why we need to add 8 H plus on the left side, and then the charge is balanced. After balancing the charge, we balance the hydrogen, and for that we need to add here 4H2. And if you check the oxygen, it should automatically be balanced. So left side mein we have 3 plus 7 10, and right side mein 6 plus 4 10. It is balanced. Is it okay? Clear na? Risha? Yes, sir. कहाँ problem कहाँ हुआ था? What was the step in which you are not clear? सर वो 6 इलेक्ट्रॉन वाला मेरे से गलती हो गई. ओके 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 ठीक है. अभी आइडेंटिफाई कर दो. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स और योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स, है ना? एंड दैट विल बी इन फैक्ट that is going to be beneficial in the exam finally. ठीक है. Okay, M में I'll directly write ये +7 दिख रहा है, यहाँ +2 दिख रहा है. H2O2 का O is -1, oxygen का O is 0. This is one point which we are supposed to know. I told you earlier also, if I am having H2O2, O is having -1 oxidation state, it can behave as oxidizing agent as well as reducing agent. That depends कि सामने कौन आए. If KMnO4, which is a very good oxidizing agent, is coming, then H2O2 will be acting as a reducing agent. It will reduce KMnO4, it will oxidize itself. And you can see that -1 to 0 jana is oxidation of oxygen. And that's why if I am writing OHR, I'll be writing H2O2 giving O2. And if I am writing RHR, I'll be writing KMnO4 giving MnSO. Is it okay? Simple abhi tak. Now, oxygen is balanced, Mn is balanced, so we don't have to put any coefficient, but based on the total change in oxidation state, change per oxygen is 1. So for 2 oxygen, it will be 2. And in this case, +7 to +2 is 5 ka change per atom of manganese. There is just 1 manganese. And that's why if you add it, now we have got KMnO4 plus, अच्छा यहाँ पे 5 से multiply, यहाँ पे 2 से multiply, so that reaction is balanced. So we need to put 2 here and we need to put 5 here. That gives you 5O2 plus 2 MnSO4. Now this reaction is molecular, so we don't have to be worried about the charge, but we need to see all the other atoms. Sir, Yeah. So OHR, how did you get 2 electrons? because each O was in -1, which is going in 0. So per oxygen, there is change of 1, and we have 2 oxygen atoms in H2O. Okay.
Clear na? So Minus 1 to 0 changes of 1. But that is per oxygen, and we have 2 oxygen atoms in H2O2 and in O2. Na? That's why we first balance the functional atom. And then we decide ki both of the sides are having same number of functional atoms. Per atom changes this much. So how will be the total? How much will be the total change for all the functional atoms? Raghav. sir, so the side where the oxidation state is greater, there we have the electrons. The oxidation is increase in oxidation state. So during oxidation, we'll be putting electron on the right side. For reduction, when electron oxidation state is decreasing, I'll be putting electron on the left side. समझ गया. Okay. Now after that, we have balanced Mn. We have balanced oxygen of H2O2 with oxygen of O2. We have not balanced the oxygen of MnSO4 right now. That's why we need to be careful about that. So about all the other atoms, including like in H and O का मामला तो एकदम end में ही करना है. So if you see बाकी क्या क्या बच गया, K बच गया, Mn बच गया, S बच गया. For K, we have K2SO4 on the right side. And that's why I need to put one K2SO4 on the right side so that K gets balanced. What about Mn now? Mn is already balanced. What about sulfur now? How many sulfur on the right side? 3. 3. है ना? एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3. We have 3 sulfur, so we need to put 3 H2SO4 on the left side. And now we have balanced K, Mn, S, all the things, but H and O are remaining. So in order to balance hydrogen, we need to put, we have 6 and plus 10, total 16 hydrogen on the left side. So we need to put 8 H2O on the right side. And now my claim was oxygen should automatically be balanced. If you see 8 plus 10 plus 12, 8 plus 10, 18 plus 12, 30. Either 10 plus 8, 18 plus 4, 22 plus 8, 30. It is balanced. Okay ना? Any doubt? चलो N देखते हैं. N is the example in which we are saying कि this is also Harsh, tell me. Sir, here H2O2 में the oxidation state was -1. O2 में it was 0 and H2O में it was -2, but we specifically did from H2O2 to O2 because we already have a reduction half reaction. Whenever we will have such type of substance like H2O2 ना, जिसका दोनों type का behavior हो सकता है, we'll always check the other substance. Like I'll check the behavior of KMnO4. If Mn is getting reduced, then definitely H2O2 का oxygen is getting oxidized. Okay. So whenever we are having H2O2 type of substance for which behavior can be oxidizing or reducing, I'll always check कि सामने कौन. Okay, and that will give you the hint. Chalo, N is P2H4. This is again disproportionation reaction. If you see, I have given you PH3 plus P4H2. No, अब देखो कहानी दो तरीके से हो सकती है. देख के अगर बैलेंस हो रहा है तो कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, बट अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, वी हैव द मेथड. But before going to the method, we need to identify the oxidation states. So मैंने पहले भी बोला था H bonded with metal will have -1, but H bonded with non-metal will have +1, है ना? So that's why we gave it +1. So that's why P will be -2. Is it okay? In this case, it will be -3. In this case, it will be -2/4, which is -half. Is it okay? I'll just write it clearly. If I'm having P4H2, so P of P4H2, by considering H ka +1, I'll take this one as -half. Then only it will be balanced. Right? That means if I'm trying to write the OHR will be P2H4 giving oxidation का मतलब -2 से -half जाना, that is increase in oxidation state. So that's why we'll be writing this. And in RHR, I'll be writing again P2H4 itself is getting converted into PH3. Now I'll balance the phosphorus. For that I need to put 2 here, and in this case I need to put 2 here. And then if you check the number of electrons, oxidation state is going from -2 to -half. How much is the change per phosphorus? -2 से -half.
plus 3 by 2. minus 3 by 2 का change. We consider the magnitude of change. Okay. So 3 by 2 का change per phosphorus, and we have 4 phosphorus. है ना? So 3 by 2 into 4 will become 6. And that's why we'll say, in this case, 6 electrons are released. In the second half, RHR वाले में, reduction half reaction में, it is going from -2 to -3. 1 का change per phosphorus. We have 2 phosphorus, so plus 2 electrons. And that's why when we are adding it, I need to multiply this reaction by 3. After that, if you check, we have got 2 and plus 3, 5 P2H4 giving P4H2 plus how much? 6 PH3. Now if you check, it is already balanced. And तक any doubt? चलो नेक्स्ट देखते हैं, which is important again, बाद में क्वेश्चन में भी मैं यूज करूंगा ये O वाला. If you see the O वाला example, AS2S3 plus HNO3 S3ASO4 plus H2SO4, and water is always allowed to be added. Whenever you need it, you can add it. So if I'm writing OHR, the problem with this reaction is you are having arsenic with +3 oxidation state, sulfur with -2, and with +5. And if you check, arsenic as well as sulfur is getting oxidized because it is getting +5 and this is getting +6 and nitrogen is getting +2. So if I write OHR में, I need to write both the things on the right side. Like I'll be writing AS2S3, but I need to write S3ASO4 plus H2SO4. Okay. And in RHR तो बहुत ही clear है. This says we have HNO3 giving, and later on I'll tell you ki if the question is not of balancing and if it is a question of simply stoichiometry in which we are getting so much effort to balance, just balance the reaction, I'll give you a shortcut which will make it much easier than the method of balancing. We will discuss that later. Mostly अगर time मिला तो आज ही उसको वहां तक पहुंच जाएंगे. So basically, if you see, first we balance the functional atoms, so that's why we need to put 2 before H3AS4 so that AS is balanced, and we need to put 3 here so that S is balanced. Is it okay? After that, if you see, 2 arsenic atoms are going from +3 to +5. So 2 का change per arsenic, we have 2 arsenic. So 4 का change for arsenic के point of view से. Sulfur के point of view से, we have 3 sulfur. Every sulfur is going from -2 to +6. -2 to +6. What is the change per sulfur? -2 to +6. 8. 8 का change per sulfur. We have 3 sulfur. So that's why total changes of 24. Arsenic का 4 and sulfur का 24. Total 28 ना. And that's why, अच्छा यहाँ नहीं किया, इधर कर दिया. Okay, I'll write 2 here. ये हटा देता हूँ. 2 here and 3 here, and then we have 28 electron. Understood ना everyone? Okay. Now, if you see, यहाँ पे तो this one is going from +5 to +2. So we need to write 3 electrons. And that's why before adding these reactions, we need to multiply. In the first half reaction, I'll multiply by 20. हाँ जी. 28 इलेक्ट्रॉन से चार. देखो ना, आर्सेनिक 2 है ना. We have 2 आर्सेनिक है and we have 3 सल्फर. इसके लिए कितने का चेंज है? +3 से +5 2 का चेंज. इसके लिए चेंज 2 एटम्स. और इन तीनों के लिए 8 का चेंज है ना. That's why I'm adding total change, and that is coming 28. Okay. Now, if I'm adding the half reactions, I'll be putting 3AS2S3 plus we have 28 HNO3, and that is giving you
6H3ASO4 plus 9H2SO4 plus 28NO. After that, we need to see again all the atoms, because this is molecular reaction. We need to take care of all the atoms. Arsenic is balanced, sulfur is balanced, nitrogen is balanced. So we have only hydrogen and oxygen. For hydrogen, if you see left side mein we have 28 hydrogen. Right side mein we already have 18 plus 18, that is 36. So 28 versus 36, 8 ka gap hai. So for that, we need to write 4H2O on the left side. After writing, we need to check the oxygen. We have 84 plus 4, 88 oxygen on the left side. We have 24 plus 36, that is 60 plus 28, 88 oxygen on the right side. So it is balanced. Is it okay? Now you all are getting the idea, na? Those fixed steps are there. If you follow them religiously, na, so then you can't have any mistake. जहां थोड़ा बहुत दाएं बाएं करते हैं ना, तो फिर मिस्टेक होता है. कुछ भी भूल गए, कुछ छूट गया, कुछ स्टेप बंक मार दिया, है ना, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द प्रॉब्लम. अदरवाइज देखो ना, जो मैंने बताया वही आई एम अप्लाइंग एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग द राइट आंसर, है ना. ओके, एनीथिंग एल्स? एक बच गया ना वही आर वाला. ओके, आर वाला इज WO3CN minus. Okay, let's see that also. So directly I'll be writing the steps. OHR में if you see WA3 का if you calculate, that is going from +6 से लेकर +2 जा रहा है, and CN H2O is going this time into O2, because CN minus left में भी दिख रहा है, right में भी दिख रहा है, and that's why I'll be writing H2O going in the form of O2 is the OHR this time. ठीक है, and then we'll be writing RHR में WO3 is giving you WCN6 4 minus. Now if you check, पहले तो atoms balance करने हैं, so for that I'll be putting 2 here. So oxygen is balanced, and in this case W is already balanced. W is tungsten. Okay. After that we'll allot the electrons. For electrons, if you see -2 to 0, 2 का change per oxygen, we have 2 oxygen. So 4 electron on the right side. And in this case, it is going from +6 to +2. CN को -1 treat करना है. So after taking CN as -1 as a whole, we'll be getting +2. So 4 का change per W, and we have just 1 W, and that's why 4 electron. Both of them are having same number of electrons, so it has become easier. So we'll be writing here, we have 2H2O plus WO3. Ayusha, बोल बोलना कुछ तो बोल. सर गलती से हो गया, पता नहीं कैसे. ओके, पता नहीं, ये क्राइम है, पता नहीं होना. कुछ भी क्लिक करेगा क्राइम करेगा. अरे नहीं सर, हाथ ऐसे रखा था तो उससे लगा मैं हैंड रेस कर रहा. ऐसे में जेल जाते हैं आजकल लोग, बच के रह. हाँ, चलो, आफ्टर दिस वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का सारा हैंडल कर लिया. नाउ दिस रिएक्शन इज आयनिक इन नेचर, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द आयन चार्ज बेसिकली. इन दिस केस इफ यू सी ना, चार्ज के लिए वी हैव Cn माइनस एंड OH माइनस, बट वी हैव स्टिल नॉट बैलेंस द C and N. For that, before adding any H plus or OH minus, I need to balance Cn minus, and for that we need to put 6 Cn minus. देखो इसमें ज्यादा चक्कर क्यों नहीं है, because Cn minus is on the left side as well as on the right side. So you don't have to be worried about the C or the N individually. Directly balance the Cn minus, है ना? And that's why I'm writing 6 Cn minus on the left side, which is balancing the Cn minus 6 Cn minus on the right side. After that, we'll be talking about the charge. Now the left side ka charge is -6, right side ka charge is -4. That's why we need to put 2H minus on the right side so that the charge is balanced. After doing this part, if you see H2O के लिए, H के लिए we need to balance it 4H on the left side. Right side में we have only 2H, and that's why we need to put 1 H2O on the right side. And if after that, I have claimed that oxygen should be balanced if I have not done any mistake. So we have 3 plus 2, 5 oxygen, 2 plus 3, 5 oxygen. It is balanced. So this is the one case in which we are getting
अच्छा H2O को बैलेंस कर लोगे, वो H2O कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक। So after writing this, एक H2O को कैंसिल आउट कर लोगे, ठीक है, and that will give you H2O plus WO3 plus 6Cn minus, giving O2 plus 2OH minus plus WCN64 minus. Is it okay? Any doubt? So now I've solved 4-5 questions. एक बार इसको वापस से देखोगे, attempt it again. अगर कोई कहीं भी डाउट आ रहा है, ask it. But whenever you are getting a doubts ना, राइट में लिख लिया करो वहीं पे, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में या फिर क्लास में आते हो इतने सारे मैं एग्जांपल सामने रख देता हूँ, तुम हड़बड़ा जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट विद इन टाइम। दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर गेटिंग द डाउट, साइड में लिख लो या फिर डाउट्स का एक नोटबुक बना, व्हाटएवर डाउट्स आई विल बी गेटिंग आई विल नोट इट डाउन। वो बाद में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मटेरियल होगा रिवीजन। इफ यू आर हैविंग अ डाउट्स का नोटबुक, जिसको मैं शॉर्ट नोट्स भी समटाइम्स कहता हूँ, कि व्हाटएवर यू आर हैविंग छोटे पेजेस में, कम पेजेस में लिख सकते हो ना, दैट विल बी योर शॉर्ट नोट्स, एंड इट शुड इंक्लूड योर डाउट्स, सो दैट बाद में जब रिवीजन करोगे ना, यही सब डाउट्स तो परेशान करते हैं बाद में, इफ इट हैज बीन नॉट बीन रिजॉल्व्ड, है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डाउट्स को हमेशा आइडेंटिफाई करके क्लास में आने का। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। अभी देखो ना, यही जो AS2S3 वाला रिएक्शन देख रहा है, टाइम तो बहुत लगा ना, भले ही हम लोगों ने बैलेंस किया, हाँ, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस तुम इसको बहुत ही फास्ट कर सकते हो, मगर मान लो अगर मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ दिया होता, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AS2S3 विल बी रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 84 मोल्स ऑफ HNO3, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया ना, यू नीड टू नो द रिएक्शन एंड देन यू नीड टू बैलेंस इट, देन ओनली यू कैन डू द स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट। सो द पहला प्रॉब्लम था कि यू हैव टू राइट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट। We will be talking about today a method which is called method of chemical equivalence, by which most of the time, not all the time, but most of the time, we will save our time if we don't have to balance the reaction, है ना। If I tell you a method in which balancing is not required to solve that question जो मैंने अभी तुमको बोला था, that how many moles of AS2S3 will be required to consume 84 moles of HNO3, without balancing I'll give you a method जिससे तुम इसको solve, है ना। That method is called chemical equivalence. My favorite method at my time of मैं जब मैं स्टूडेंट था, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें मजा इतना आएगा ना, you'll be framing the equation in one line for the complete problem and next step में इसको solve कर जो ऐसा। तो बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि whatever I am teaching you उसको बहुत ध्यान से देखना है, whatever doubts you all are having, just identify that and ask it, बिल्कुल फ्रैंकली पूछने का है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल बी स्टार्टिंग दिस सेक्शन विद अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, कि जब कंसेप्ट आया तो कैसे डिफाइन किया, उसकी बेसिस पे भी प्रॉब्लम बनते हैं, बट बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम बनते हैं, और धीरे धीरे डेवलप करते करते उसको हम लोग रेडॉक्स पे लेके आए, ठीक है। तो व्हेन आई विल स्टार्ट विद द अर्लियर डेफिनेशन, की जब ये थ्योरी आई थी बहुत बेसिक, जब लोग ऑक्साइड, क्लोराइड और हाइड्राइड से ऊपर ही नहीं उठे थे, तब what was the definition of these type of terms, that's first thing. Then we'll certainly develop it for any substance without any reaction. Then we'll be talking about reaction, उसमें we'll be talking about acid based reaction first, which is easier to handle, then we'll be coming to redox, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे 3-4 केसेस बना के we'll start this part which is called law of chemical equivalence, वहां तक आएंगे। पहले chemical equivalence का फंडा क्या है, what is this concept, what was the earliest definition or earlier definition I'll call it, वो क्या था, उसके हिसाब से पहले बढ़ेंगे, और देखोगे कि there are some very small or very simple questions which might be given to you in your module or the material, जिसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। द अर्लीस्ट और द अर्लियर डेफिनेशन, द प्रीवियस डेफिनेशन, जब जिस समय ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था, एट दैट टाइम देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we have done the reaction से related calculation in mole concept during stoichiometry, है ना, we have done that already। now same problem we want to solve by or without balancing the reaction। For that we need to go in the parallel universe like of thing, that means mole concept में we were using the concept of mole, molecular mass और atomic mass, we were talking about molarity, ऐसे ऐसे terms दिख रहे थे ना जिसको use करते थे while solving the question। Now in this concept we will have some other terms like equivalent weight in place of atomic or molecular weight is coming। Second thing is I'll be talking about something called one number of moles की बात करते थे, या we will be talking about number of gram equivalents or equivalents। Third concept वहां पे molarity as a concentration term we wish to talk about,
यहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये 3 नए टर्म आएंगे, तो धीरे धीरे इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे मोल कंसेप्ट भी पढ़ाते तो स्टार्ट कहाँ पे करते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो वैसा ही व्हाट दिस टर्म इक्विवेलेंट मास इन दिस यूनिवर्स विल बी कॉल्ड, दैट वी आर गोइंग टू डेवलप राइट नाउ। सो द बेसिक, बहुत ही अर्लियर डेफिनेशन जो था ना, that was like it was about reactivity towards hydrogen, oxygen and chlorine. Why only these three elements? क्योंकि उस समय पर जब बहुत सारे एलिमेंट्स या फिर उनके कंपाउंड्स नोन नहीं थे, देन दे वर नोइंग कि जितने भी एलिमेंट्स नोन है ना, उनका कम से कम इन तीनों में से किसी एक के साथ तो कम से कम डेफिनेटली कोई एक कंपाउंड है, लाइक हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। देयर आर सो मेनी ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स एंड हाइड्राइड्स known, and that's why they chose these three elements as a reference। और क्या बोला, equivalent mass of a substance will be numerically same as the mass of this substance which will be reacting with or replaces that that means it can react with hydrogen or oxygen or chlorine, it can replace hydrogen, oxygen or chlorine। how much hydrogen? तो 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine, that was taken as the reference। I'll give you an example, दो तीन एग्जांपल करके देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मोल मेथड यूज करेंगे और उसी से इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सो इफ आई गिव यू, आई एम हैविंग calcium and I am having H2, if it is reacting, and luckily this is the balanced reaction, है ना, we don't have to do the balancing of it, है ना। So this is already balanced reaction, and that balanced reaction tells us that 1 mole of calcium will react with 1 mole of H2 and will form 1 mole of this thing, है ना, because it is a balanced reaction। 1 mole of calcium means 40 gram calcium, 1 mole of H2 means 2 gram H2, and इसकी जरूरत अभी नहीं है। Now we have a simple relation that 2 gram hydrogen is reacting with 40 gram calcium, simple। And it says how many grams of that substance will react with 1 gram hydrogen. That's the simple unitary method। So we'll be applying 1 gram hydrogen will react with 40 into 1 by 2 gram calcium, that is 20 gram calcium। And that's why we will say equivalent mass by definition is unitless। So we'll say equivalent mass or equivalent weight, chemistry वालों को mass weight का difference नहीं पता चलता, so we frequently use this mass की जगह weight। So this will be 20। Is it okay? This is the first example। Second example is, चलो कोई एक oxide ले लेता हूँ, like if I take aluminium plus O2 and this gives you Al2O3। जब तक हम लोगों ने वो ट्रिक नहीं सीखा है जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, तब तक we need to write the reaction, we need to balance, है ना। So can you balance this one? और इसके लिए पूरा रेडॉक्स वाला स्टेप यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी राइट नाउ आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल एग्जांपल्स जो तुम देख के बैलेंस कर सकते हो। व्हाट शुड वी राइट टू बैलेंस 2 and 3/2. ओके, सो यू आर सेइंग 2 हियर, एल्युमिनियम की जगह 3/2, दैट्स ओके। और अदरवाइज इफ यू आर सो ऑब्सेस्ड विद द इंटीजर, आई विल बी राइटिंग 2 हियर एंड देन आई विल बी राइटिंग 4 हियर एंड 3 हियर, है ना। हाँ दैट कैन आल्सो बी द बैलेंस, बट व्हाटएवर यू आर टोल्ड मी ना, तो वो भी राइट। इज इट ओके? नाउ दिस बैलेंस रिएक्शन सेज that 4 mole of aluminium will consume 3 mole of oxygen, will produce 2 mole of this, है ना, Al2O3। Now in terms of mass if you see, we'll say 4 moles of aluminium का मतलब है 4 into 27 gram, 3 moles of O2 का मतलब है 3 into 32 gram, and they are reacting together, है ना। So we will say 3 into 32 gram oxygen is reacting with 4 into 27 gram। I'm not doing the calculation because बाद में cancel out aluminium, and that's why we will say oxygen के लिए the reference is 8 gram, and that's why we'll say this will be into 8 upon 3 into 32, and that if you solve, it is coming how much? 9 4 4 cancel out, so 8 4 ये 9 cancel, grams. 9 gram। Now so that's why equivalent weight of aluminium, we will say it is simply 9। Is it okay? थर्ड हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का दे दिया एग्जांपल, चलो हाइड्रोजन का एक रिप्लेसमेंट वाला दे देता हूँ।
फिर क्लोरीन का भी एक देख लेंगे। हाइड्रोजन का जैसे मैंने बोला ना, इट कैन रिएक्ट विद और इट कैन रिप्लेस ऑल्सो। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक इफ आई गिव यू जिंक plus H2SO4 giving ZnSO4 plus H2. If you see in this reaction, hydrogen is being replaced by zinc, है ना? Zinc is replacing hydrogen from H2SO4 and it is forming ZnSO4 and H2. So it is also called hydrogen displacement method, or sometimes they'll ask you which of the following is a non-metal displacement. So hydrogen is a non-metal which is being displaced by zinc, है ना? So यहाँ पे this is also balanced reaction. So 1 mole will require 1 mole and it will produce 1 mole of H2. This time this one is important. So we'll write this is 65 gram. This will be 2 gram. So this time we are saying that 2 gram hydrogen is being replaced by एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ऐसे भी ये क्वेश्चन अब आते नहीं है, पुराना हो गया है, बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, by 65 gram zinc. And that's why we'll say 1 gram hydrogen is replaced by or displaced by 65 by 2 gram zinc. And that's why if they are asking what is the equivalent weight of zinc, so we'll say 65 by 2. That is 32.5. So, yeah. So I don't understand what you're talking about displacement. See now, in the first example, calcium was reacting with hydrogen, है ना? In third example, is Zn forming a bond with hydrogen or Zn is reacting with hydrogen? No. नहीं ना, it is displacing hydrogen from H2SO4, है ना? Okay. मतलब H2SO4 was there, इसने H2 को धक्का मारा, खुद सल्फेट के साथ चिपक गया, and hydrogen was displaced, है ना? Yes. And by definition, it was allowed because it says which reacts with or replaces. So from both the definitions, both the parts, we can find out the equivalent weight. Is it okay up to this point? So, एक example chloride का भी कोई भी एक दे देता हूँ. Like if I am having, चलो सोडियम पे ही बात करते हैं. This and the balancing is very simple. I can write here 2 and I can write here 2. That means we are saying 2 mole of sodium will react with 1 mole of chlorine and 2 mole ka mass will be 2 into 23 gram and 1 mole ka mass will be 71 gram. And that's why we will say 71 gram chlorine is reacting with 2 into 23 gram sodium. And that's why 1 gram of chlorine will react with 2 into 23 by 1 minute. Sorry, iska reference is 35.5. So that's why this much by 71 into 35.5 gram sodium. If you calculate it, we will be getting 23 gram sodium. And that's why we will say equivalent mass of or equivalent weight of sodium is 23. Is it okay? That's the first concept, basic concept. लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं. Like I'll give you one question. So hydrogen 1, oxygen 8, and chlorine 35.5. That was the reference. With this much of HO or Cl, how much mass of the given metal or the element is reacting or displacing it? That will be the equivalent. Solve this question. सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? मत कर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने बैठ के सेट किया है, तो इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम.
Any answer? Yes, sir. Okay, Hers has got the answer. Anyone else? Hers, tell me the method. So first I figured out, like they've given 20%, so I figured out how much oxygen was there in the metal oxide. Then I Okay. subtracted it from the entire mass to find out the mass of Like metal. 0.795 का 20% you have calculated and Yes, then sir. subtracted, है ना? Yes, sir. Okay. Then after that, unitary method. Sonia, have you done some round off? ऐसा कुछ किया है क्या? एंड में किया. Okay. Okay, इतना कुछ नहीं करने का. ना approximation, ना इतना calculation. Whatever compound is there, ना, it will have same mass ratio irrespective of its sample size, है ना? If I'm taking sodium chloride, sodium to Cl atoms का ratio will always be 1:1. That means 23 gram of sodium will be present with 35.5 gram chlorine, है ना? That's the rule. So that is irrespective of पानी में एक लोटा उठाऊं कि एक पूरा बाल्टी उठा, it will have formula H2O only, है ना? And that's why we are allowed to take any sample size while calculating this thing. So we don't have to take this 0.795. जानबूझ के मैंने ऐसा गंदा नहीं, ठीक है? So we don't have to take that. This itself, that 20% oxygen by mass itself says that the remaining 80% is metal. And that's why we'll directly write 20 gram oxygen is present with 80 gram metal. And that's why 8 gram oxygen, that was the reference, will be present with this much gram metal, which is 32 gram metal. And that's why we'll write equivalent weight of metal is 32. Understood now? यूशा कैलकुलेटर चाहिए क्या इसके लिए? तो वी नीड टू बी केयरफुल कि ऐसा अननेसेसरी कैलकुलेशन में भी नहीं फंसने का है, ठीक है? अंडरस्टूड ना एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलो, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन. सॉल्व दिस वन. सर एनटीपी और एसटीपी सेम होता है? ओके, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. प्रैक्टिकली या फिर अभी तक आईआईटी ने जो यूज किया है ना, वो एनटीपी एसटीपी दोनों में दे टेक प्रेशर एज 1 atm. Officially it was changed in 80s and then STP means 1 bar pressure, not 180. बट प्रैक्टिकली अभी तक मैंने, इनफैक्ट जब ये कंफ्यूजन हुआ था तो मैंने पूरा पिछले साल के क्वेश्चंस देखे थे, अभी नहीं 5 साल पहले तक देखा था. तो आईआईटी ने भी जब भी एसटीपी यूज किया ना या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ने, वो अभी तक एसटीपी का मतलब वही 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अभी तक लेते हैं. अदरवाइज इफ दे आर एनटीपी का मतलब तो वही है 1 atm प्रेशर 0 डिग्री सी टेम्परेचर. इसलिए मैं सेफ खेलता हूँ हमेशा, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ हमेशा एनटीपी लिखता हूँ. सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन. नहीं तो एसटीपी का मतलब मोलर वॉल्यूम कैन बी 22.7 लीटर, ऐसा आ जाए. सो दैट विल चेंज द आंसर. Sir, in the first question, that means there was no use of the. 0.795 ना. हाँ. तुमने छोटा सा टुकड़ा उठाया, मैं पूरा बकेट उठा के ले आऊंगा, इट विल नॉट चेंज द मास रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स ना प्रेजेंट इन द कंपाउंड, है ना.
मैंने अभी वही बोला ना, ग्लास So में we एक take the ग्लास ratio. पानी लूं या एक बकेट पानी लूं, वाटर का फॉर्मूला विल रिमेन H2O एंड परसेंटेज बाय मास और द मास रेशियो विल रिमेन सेम, है ना। देखो ना, 0.795 इंटू 20/100 भी लिख देता ना मैं, और राइट साइड में 0.795 इंटू 80/100 भी लिख देता ना, वो 0.795 100 विल गेट कैंसिल, है ना। Got it. इवन इफ आई कैरी दैट ना, तो मान लो तुमको ये डाउट आ भी जाता ना, तो इन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई विल कैरी द कैलकुलेशन, आई विल नॉट कैलकुलेट कि हाउ मच इज 20% ऑफ 0.795, आई विल सिंपली राइट 0.795 इंटू 20/100, इतना लेके मैं कैरी करता और बाद में वो कैंसिल आउट हो जाता अपने आप, है ना। ठीक है, क्लियर ना। यूषा, ध्यान से देख, लग नहीं रहा है कि कुछ अजीब कर लिया तूने। यस सर, वो तो लग रहा है। तो देख अपना कैलकुलेशन देख, अपने नंबर्स यूज किए हुए देख, यूनिट्स चेक कर। Sir, I said my answer. ओके, okay, Harsh has got the right answer this time. Okay, अभी Trusha has got some answer which I doubt. Okay, let's see. This much of H2 means 112 upon 22.4 लिखो तो चलेगा क्या? These many moles. क्या कांड किया मैंने हर्ष ऐसा बोल के? Conversion like वो milliliter और वो liter. हाँ, Yusha, this is in milliliter. We can't divide it by वो 22.4. किया I need. मैंने अच्छा एंड वो में, किया. वो भी क्या, मैं एंड में 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम में लिया। Okay, this much of H2 is there, है ना? Which means it is 1/200 mole H2, which is double of this, because H2 ka molar mass is 2 gram. So this much of H2 is there, which means it is this much of H2. Now we can say 1/100 gram hydrogen is getting replaced by 0.325 gram metal. So that's why 1 gram was the reference. So we'll write 0.325 divided by 1/100, and that will make it 32.5. Trusha, have you got your mistake? Yeah. H2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, not 1 से, है ना? Yeah. Okay. 2 grams because it's H2. Yeah, H2 is there ना, this is H2 ना, H2 का molar mass is 2 gram, है ना? Yes, sir. Okay, that's why equivalent weight. ये वही एग्जांपल है, मैंने दिया था तुम लोगों को एग्जांपल, ये देख इधर, this was the case. जिंक की बात कर रहा था मैं, which was having 65 gram was its molar mass, or atomic mass was 65, and its equivalent mass was coming 32.5. Now this was the case with the point of view of earlier definition. Similarly, I'll be talking about 2-3 points without considering any reaction. Like if I'm simply asking you equivalent mass of an ion, कोई भी ion रहे, उसका अगर मैं point पूछ लूं कि what is the equivalent mass, and if I don't mention any reaction, so without mentioning any reaction, equivalent mass of ion will be its formula mass upon magnitude of its charge. If it is anionic
anion, then we'll be putting जैसे -2 charge है तो we'll put 2 there, mod of that charge of ion, है ना. So for example, I can discuss about a few ions, like for H plus equivalent mass will be, अच्छा, formula mass का मतलब है if you are having monoatomic ion then atomic mass itself is formula mass, and if it is a polyatomic ion then the molecular mass is a formula mass. This is equal to atomic mass for monoatomic ion, and this will become molecular mass for polyatomic ion. Okay, so for this case, hydrogen, this is a monovalent, so its atomic mass is 1 and its charge is also 1, so we'll say its equivalent mass is 1. If I say for Cl minus, equivalent mass will be 35.5 is its atomic mass and its charge ka magnitude is 1, so 35.5. If I say Mg2 plus, then equivalent mass will be, its atomic mass is 24 and charge ka magnitude is 2, so it becomes 12. For Al3 plus, equivalent mass will be 27 is its atomic mass and 3 is its charge ka magnitude, so that's why 9. For NH4 plus, बताओ जरा इक्विवेलेंट मास कितना लिखूंगा? What will be the equivalent mass of NH4 plus? And right now we are not talking about any reaction, particularly not definitely the redox reaction. I'm simply asking you what is the equivalent mass of NH4 plus? It is formula mass upon the charge का magnitude. What is the formula mass of this NH4 plus? 18. 18 है ना, तो 18 upon 1, so that is simply 18 है ना. वैसा ही थोड़ा बढ़ाते हैं इसको. चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे ना, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव या पॉजिटिव. हाँ, मैग्नीट्यूड लेना, इसलिए मॉड लिखा है, देखो नहीं यहाँ पे, you have written the mod. So if I say for NO3 minus, if I ask you, equivalent mass will be, if you calculate the molecular mass, it will be coming 62 upon 1, so that's why it is 62. If I ask about sulfate, this will have equivalent mass. If you calculate the molecular mass, it will be coming 96, so that much by 2, it is 48. For phosphate, if you write equivalent mass, 95. So that will be 95 upon 3. Okay. Charge भी देखना है ना. So these type of examples can be there, but इसकी basis पे, now again without considering any reaction, or if I am considering simply a double displacement reaction in which simply the ions are getting exchanged, for those type of reactions or without any reaction, if I am talking about equivalent mass of a binary compound in which there is some cation or anion, then what to do? Just see that. It is simply equivalent mass of cation plus equivalent mass of anion. Okay. Now, can you tell me equivalent mass of Na2SO4 will be? What does it mean, binary compound? Binary compound means you will be having one cation and one anion. Like a salt. Yeah, like a salt. But sometimes we can also talk about HCl, MgOH twice. These are also binary. You know? Okay. So equivalent mass of, okay, Na plus plus equivalent mass of SO4 2 minus, and we have done the calculation. For Na plus it was 23 by 1, and for sulfate 21. okay, so 23 plus 48 48, it will become 71. Okay, चलो बताओ इसका जरा. Okay, for aluminium we will write 27 by 3. For sulfate तो ऊपर ही लिखा है 96 by 2. That becomes 9 plus 48, that is 57. 57. Okay, next one.
सर फ्रैक्शन में देना है कि नॉन? फ्रैक्शन में बोलो ना, क्या दिक्कत है, मेरे को फ्रैक्शन आता है। सर 217/3। ओके 217, तो 115/3. 155। मुझे तो आता है फ्रैक्शन, तुझे आता है? सर वो 40/2 को 40 समझ लिया। समझ लिया? अपना लिखा खुद ही नहीं समझ रहा है, तेरे शरीर सारा जमीन जायदाद सब कब्जा मारेगा। दिस इज 95/3 है ना, so it will be coming 155/3. Is it okay? Any doubt? Anyone having any doubt? If you don't have doubt, so I am having a doubt. Solve this question. $59. Okay, I'll wait for other people. 59. 59. Okay, okay. Yusha, कुछ नया बोल। सर मैं 2-3 बार क्रॉस चेक करके भेज रहा हूँ, तो रुको ना। गीत, नंदिता, राघव, नो, गीत, नंदिता, अनुराग, कुछ तो बोलो प्रिशा। यूषा सबके बदले बोल देता है, 3-4 आंसर बोलता है एक एक क्वेश्चन। यू आर गुड फॉर माई क्लास, यू सेट द एग्जाम्पल कि कुछ भी बोला जा सकता है। सर वो ऑप्शंस बना रहा है। हाँ, दैट्स वन पार्ट। बाकी लोगों का हेजिटेशन भी निकालता है, देख मैं कुछ भी बोलता हूँ, बाकी सब भी कुछ बोल सकते हैं, एंड आई लाइक दैट। 60। ओके, देखो कुछ बोला ना इसने, अभी देखो 2 मिनट में रुक जाओ ना तो कुछ और बोलेगा। ओके लेट्स सी। समथिंग amazing has happened right now. Yusha का आंसर इज राइट, ऑल ऑफ यू आर रिमेनिंग, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। This is salt का, this is not organic acid, this is salt of organic acid, which is actually sodium salt. So if I say equivalent mass of salt, that will be equivalent mass of Na plus, because cation is Na plus equivalent mass of its anion. We don't know what anion is there, but we know that it will be Na plus equivalent mass equivalent mass of anion. This salt equivalent mass is given as 82, and that is, this will be 23/1. We have done that many times, you know? And that plus equivalent mass of anion. So the 59 answer is not the right answer, because it was not equivalent mass of acid, it was equivalent mass of anion. And definitely it will be one of the option. So this is 59. But we are talking about acid. Acid is having what type of cation? Acid is having H plus. H plus, and that's why if I am talking about equivalent mass of acid, it will be equivalent mass of H plus equivalent mass of the same anion, and that's why we'll write it will be 1/1. One is the atomic mass and one is the magnitude of charge, and that we have already calculated 59, and that's why total 60 will be the answer. Is it okay? ओ अभी हाँ जी, हाँ, राघव समझ डाउट क्या? नहीं नहीं समझ गया। समझा ना?
ओके चलो अब बचपन के खेल खेलते हैं, जरा एक टेबल फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला खेल खेलते हैं। सर जेई में तो अभी भी पूछते हैं। मैं और तुम उनके लिए अभी भी बच्चे ही हैं। चलो साफ बात करते हैं ना इसको। सर हम्म, चीज कंफर्म करनी थी, कटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। हाँ कैटायन पॉजिटिव होता है। ओके कैटायन के लिए 23 है ना, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। अनायन के लिए इट वाज 96/2 एंड दैट वाज 48। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। Now that means it will be 23 plus 48. We have done that. This is coming 71. Now I want you to do another calculation. What is the total positive charge of cation or total negative charge of anion ka magnitude? 2. It is 2, Two. because we have 2 Na plus, and that's why the total positive charge becomes 2. Or we have one sulfate which is also having negative charge, and that's why I put a equality ka sign in between these two. So we need to have that confirmation ki dono barabar aana chahiye, then only we'll be reporting this answer. What is the molecular mass of sodium sulfate? If you calculate that, how much we are getting? 142. 142. 142. And I have told you to just do one exercise, molecular mass divided by this n. That is coming 71. We are getting both the numbers exactly same, not approximately, it is exactly same. And if you do the same exercise in every remaining case, like यहाँ पर मैं 24/2 करूंगा, that is 12. OH minus के लिए it will be 17. So 12 plus 17 is 29. यहाँ अगर मैं करूंगा फिर से cationic charge is 2. Total magnitude, total molecular mass if you calculate 34 plus 24 58 आ जाएगा. So this is also coming 29. So the purpose of this exercise was the same. This is 1, this is 48, this is 1 plus 48, 49. Molecular mass, total positive charge or negative charge of anion is 2. In this case, we'll write 98/2 and we are getting 49. Again, same value. If you calculate this one, 9 plus 48 and we are getting 57. And if you calculate this one, total positive charge in this case, what will be the total positive charge or negative charge? 6. 6 है ना. Al3 plus का 2 ions, so that means 6 positive charge, और sulfate का 3 ion means -6 charge, and that's why magnitude will be 6. And then if you calculate the molecular mass, how much is that? 342. 342. Okay, 342. 342 by 6 if you do ना, you will again get 57. So in Sir, every case by 5 करेंगे ना? 6 करेंगे ना. नहीं सर, वो मुझे n लग रहा था नंबर ऑफ. रुक जा, ऐसे ही केस में रुक जाते हैं. 20. This was 95/3 है ना. And that means if you calculate it, हम लोगों ने किया है already, 155/3 आया था ना. And if you do the calculation, this one again total charge is 6. If you calculate this one, it will be coming 310/6, which is again 155/3. Which means we are getting these two columns are exactly same. So we can write the equivalent weight is molecular mass upon n. ऐसा लिख सकते हैं ना. Now ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस में तुमको करके दिखाया, but in general equivalent mass has been defined. The modern definition of equivalent mass is like that only. It will be equal to the formula mass upon some number. Okay, and we can always write that, है ना. That number will be how much, that is the question. So if you see the example from the initial case ना, if you see these cases ना, जितने भी मैंने example दिए हैं, देखो ना यहाँ पे 20 आया था. कैसे आया था? कैल्शियम का atomic mass is 40, equivalent mass is coming 20. That is 40 upon valency ना. कैल्शियम की valency is 2 ना. देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हुई तो 27/3 was the answer. जिंक की वैलेंसी 2 है तो it was 65/2. सोडियम की वैलेंसी 1 है तो it was 23/1. So we can write here na, equivalent mass of these metals in these cases is its atomic mass upon upon valence. Similarly, if you see the next case,
when we were talking about equivalent mass of ion, it was formula mass upon again some number which is magnitude of charge of ion. In the next case, again, we have got this case where we are saying equivalent mass of these binary compounds will be equal to their molecular mass upon the total positive charge of cation or the magnitude of total negative charge of an ion. Is it okay? So in general, we can define equivalent mass as formula mass upon, in this case, so we can define it like molecular mass upon n, but in general, the general result is equivalent mass can be defined as formula mass upon n factor. If it is an atom, then it will become atomic mass by n factor. If it is a molecule, then it will become molecular mass by n factor. Is it okay? Now, the future part of our discussion will be about this n factor only. Why we are so much desperate about this n factor? Because it is going to give me the comfort of not balancing a complicated redox reaction to solve the question related to stoichiometry. ठीक है, तो आगे की पूरी कहानी देखोगे ना, we'll be talking about most of the time n factor. Once we have got the command over the n factor ना, फिर मजा आना स्टार्ट होगा इस चैप्टर के, इवन इन द डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, हम लोग बहुत ही हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करके देखेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट इफ यू आर हैविंग दैट क्लैरिटी ऑफ एन फैक्टर ना, उसके बाद तो मजा आना है, क्योंकि बात बराबर करने की, कुछ ना कुछ बराबर कर रहे होंगे. बट आई टोल्ड यू दैट while we are entering into this universe na, we'll be using the terms like equivalent mass तो already इतनी बार use कर लिया. We'll be using words like number of moles की जगह number of gram equivalents और equivalents. We'll be using, वहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास आता था, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट मास आएगा. वहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलेंगे. वहां पे हम लोग मोलरिटी बोलते थे, यहाँ पर हम लोग नॉर्मेलिटी यूज करेंगे. ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू कम एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल दीज टर्म्स with the known term and n factor. That's why I told you n factor is going to play a very important role. So I'll be defining all the remaining terms which we are going to frequently use in this chapter, and these terms are gram equivalent mass, number of gram equivalents or number of equivalents, and normality. What is that? Like equivalent mass was formula mass by n factor, so gram equivalent mass will become gram formula mass upon n factor. Gram formula mass will be gram atomic mass for atoms. This will be GAM, जिसको gram atomic mass बोलते हैं, for atoms, and this will be gram molecular mass for molecules or compounds. Is it okay? Now, after that, I'm trying to get something called number of gram equivalents. The basic definition is like वहां पे क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, टोटल मास अपॉन मोलर मास है ना, और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली यहाँ पे टोटल मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट सिंपली will be equal to total mass upon gram equivalent mass, और gram equivalent mass अभी just देखा है. If I write that this is total mass in gram, ग्राम में ऑब्वियस है, और ये देखो ना ग्राम इक्विवेलेंट मास को अभी मैंने क्या लिखा, ग्राम फॉर्मूला मास, अभी मैं एफएम लिख रहा हूं इसको, अपॉन एन फैक्टर ये तो लिखा है. तो दैट बिकम्स टोटल मास अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास into n factor, and total mass upon gram formula mass was number of moles na? Is it okay? And that's why it becomes equal to simply, देखो finally बाद में यही यूज करने वाले हैं, number of moles into n factor will give you number of gram equivalents. Simple. Any doubt? Anyone having any doubt? चलो दूसरा जो टर्म है, जैसे वहां पर मोलरिटी आता था, यहाँ पर इस पैरेलल यूनिवर्स में वी आर हैविंग अ टर्म कॉल्ड नॉर्मेलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. तो कभी कभी तुम लोगों में से कोई कोई आता था, सर यहाँ m की जगह n लिखा हुआ है, तो that was actually normality which is related to molarity but not always equal to molarity because it is having a definition, basic definition. वहां क्या था मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहाँ मोल्स की जगह क्या टर्म आ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहा है ना. ग्राम इक्विवेलेंट्स को मैंने अभी जस्ट लिखना सीखा है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर ना, and that's why number of moles upon volume of solution in liter was the molarity है ना.
एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मोलरिटी लिख दिया, बच गया एक एन फैक्टर. इज इट ओके? सो दीज आर द थ्री टर्म्स. अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई तो याद हो जाएगा. सिंपली याद रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला मास अपॉन एन फैक्टर, number of gram equivalents, moles into n factor, normality, molarity into n factor. बस ये तीन चीज बार बार हम लोग यूज करेंगे. Is it okay? Now, why we are learning these type of things? Because there is something called law of chemical equivalence, which will make it much easier than the reaction का balancing in most of the cases. जहां पर easier नहीं बनाएगा वहां वही मेथड फॉलो कर लेंगे. If the balancing of reaction is easier, then we'll be following that method. है ना? What is this law of chemical equivalence जिसका इतना माहौल मैंने बनाया है? If you remember, in any reaction, it is not necessary that all the reactants का molecule will be, all the reactants will be having equal consumption of moles, है ना? Moles are consumed in stoichiometric proportion, है ना? And stoichiometric proportion, if they are not same, will not say कि moles will be equally consumed. But this law says, the term which we have just learned right now, number of gram equivalents, it says that in any chemical reaction, gram equivalents of each reactant consumed and gram equivalents of each product produced are exactly equal. ठीक है? So these are equal. और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? तो मोल्स इनटू एन फैक्टर से. So if I am having that idea of n factor, I don't have to write the reaction and balance it. I'm क्या बोलेंगे, वो जो अभी क्या किया था, AS2 S3 के how many moles are required to consume these many moles of HNO3. I've got both, दोनों का moles, मतलब एक का मोल पता है, एक का मोल पता करना है, दोनों के n factor पता हो जाए तो moles into n factor will give you gram equivalents, है ना? Like if I give you this example, moles are not equally consumed because if you balance the reaction, the coefficients are not going to be equal. But I'll write in this case gram equivalents of H2SO4 consumed will be equal to gram equivalents of AlOH thrice consumed, and that will be equal to gram equivalents of aluminum sulfate produced. I've not written available, I've written consumed. That means available sometimes can be more than that if I'm having one of the reactant as a limiting reagent, है ना? So I'm saying consumed and produced will be equal, not available. Available तो मैं कितना भी डाल सकता हूँ, है ना, reactor के अंदर. This will be produced, and similarly this will be equal to gram equivalents of H2O produced. सिमिलरली ये देखो इतना बड़ा सा रिएक्शन था, इसको बैलेंस किया था और फिर जाके हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लाया था. इफ आई सिंपली से ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म में, आई विल से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम will be equal to gram equivalents of H2C2O4. और प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन क्या देंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 will be required to consume these many moles of H2C2O4. तो देखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देना है और फिर उसमें से इफ वी नो जस्ट द एन फैक्टर ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, किसी एक का मोल दे देगा तो दूसरे का मोल निकल आएगा ना. समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू मोल, दे विल गिव यू मोलरिटी एंड दे विल आस्क यू द वॉल्यूम. तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम वाज आल्सो मोल्स, है ना? ठीक है, तो यही कहानी है जिसको हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो अभी टाइम तो हो गया है. नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट जिसमें विल टॉक अबाउट की how to get the n factor in case of acid base reaction, and then a longer section will be how to get the n factor in case of redox reaction. ठीक है, टफ नहीं है, बट इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द केसेस तो आराम से वो समझ में आ जाएगा. ओके, हाँ हर्ष. सर एसिड्स के लिए डायरेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के नहीं कर सकते?
एसिड में यस वही एन फैक्टर का लाएगा. I'll tell you that. We don't have time, इसलिए मैंने कहा कि next day we are going to continue with the acid base reaction and then redox reaction. इन दोनों के n factors की बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसकी बेसिस पे, and then we'll move to different type of titration, simple titration, iodometric, iodimetric, back titration, double titration, इतना सब कुछ पढ़ना. ठीक है, चलो ठीक है, अभी यहीं क्लोज कर लेते हैं. बैच 1 का एक और भी लेक्चर है, सो आई विल टेक अ ब्रेक. 6 से तो नहीं, 6:15 से आई विल स्टार्ट. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दैट केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना. लास्ट लेक्चर है, 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, 2-3 छोटे सेक्शंस बचे हुए, तो विल डू दैट, है ना. विल फिनिश, तो 6:15 में अपन ज्वाइन करते हैं ना. आई विल चार्ज माय फोन आल्सो. ओके, वृंदा आग. Yes, sir. Volumetric will be कुछ नहीं सुनाई दिया निशिता. so the homework for volumetric will be the questions जो बाकी है वो तो first lecture. बैलेंसिंग वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 1, है ना. असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन में स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं. आई विल ट्राई टू शेयर, बट आफ्टर 1 लेक्चर ना विल बी हैविंग मेनी क्वेश्चन. ठीक है, Okay. एक लेक्चर और वेट कर लो, देन विल बी हैविंग लाइक 1 A से Z तक मैंने दिया था ना ये, तो आई विल बी गिविंग यू n फैक्टर का कैलकुलेशन ऐसा ही 25-30 एक बार में. ठीक है, विल डू दैट. हर्ष, सर आपने जो असाइनमेंट 2 दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम का, हम लोग वो क्लास में अभी डिस्कस करने वाले हैं. डाउट है तो पूछ लिया करो इसमें, हाँ. डोंट वेट फॉर दैट, है ना. ओके सर. डाउट्स आर देयर ना, जस्ट आस्क. ओके, चलो ठीक है. अभी तो सब लोग लीव कर दो. आई विल शेयर द अनदर लिंक फॉर दैट नेक्स्ट लेक्चर. सो आई थिंक गीत, हर्ष एंड अनुराग एंड वृंदा इज गोइंग टू जॉइन अस, है ना. ओके, प्रिशा यू आर आल्सो गोइंग, नहीं, यू विल बी जॉइनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, है ना. आइनिक का पहला लेक्चर यू विल अटेंड. Yeah. चलो, ओके, बाय. Thank you so Bye, much. sir. Bye.